स्टार्ट कर सकते हैं। सो दो अभी बहुत सारे लोग नहीं आए हैं. मेनी पीपल स्टिल टू ज्वाइन. नाइन सो जीरो फाइव पे शुरू करते हैं। हाँ, fine. हम्म, Dr. Pankaj might be some 5 minutes late, so not a problem. We'll continue our discussion on various skin disorders and the role of homeopathy in those disorders. So let's today have a little discussion about urticaria. So, Dr. Deepak, can you tell a little bit about urticaria? Um, what have you come across? Have you seen any cases of urticaria? So it's a very, very common thing. यस डॉक्टर शिल्पी, जो अर्टिकेरिया एक एलर्जिक रिएक्शन है। और Mhm. मैं यहाँ पे सब लोग हैं इनसे केस डिस्कशन करना चाहूंगा कि अर्टिकेरिया में आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर जो एलर्जिक पॉइंट है वो शुरू कब हुए। जनरली अगर आप मेंटल सिम्टम्स पे चले जाते हैं तो आपको ये जरूर जानना चाहिए कि कोई ऐसी चीज तो नहीं हुई है जिसमें कहीं कोई बड़ा सेपरेशन हो लाइफ में। तो ऐसी सडन सेपरेशन, खासकर जितने भी सडन सेपरेशन है कि मान लो कोई एकदम से किसी की डेथ हो गई, या कोई एकदम से कोई फ्रेंड है, या कोई बहुत फैमिली रिलेटिव है जो एकदम से छोड़ के चला गया, या कोई फ्रेंड है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये है इसके, अगर आप मेंटल स्टेट पे काम करते हैं तो, और अगर आप पैथोलॉजिकल बेसिस काम करते हैं तो पैथोलॉजी में आपको ये पता होना चाहिए कि कोई ऐसी इम्यूनोग्लोबुलिन्स तो नहीं है जो बहुत ज्यादा राइज हो रही हो, तो हमें आईजी लेवल्स हमें चेक कराना चाहिए। और जो केस के बारे में बता रहा था कि हमने केस था हमारे पास अर्टिकेरिया का, वो तकरीबन 18 ईयर से सफरिंग में था अर्टिकेरिया के। और बहुत बड़े बड़े स्किन के जो डॉक्टर्स हैं सब लोगों से उन्होंने ट्रीटमेंट लिया। और बाद में पता लगा कि जब हमारे पास आया तो हमने सोचा कि मैंने कहा देखो ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले चुका है, होम्योपैथी भी ट्रीटमेंट काफी ले चुका था, ही वॉज फ्रॉम बॉम्बे। तो हमने कहा कि एक काम करते हैं, हम आपका एक एलर्जी पैनल टेस्ट कराते हैं। तो हमने उनका एक एलर्जी फूड पैनल और एक केमिकल एनालिसिस हमने पूरा एक टेस्ट कराया। और जिसमें आप मतलब सभी लोग हैरान थे इस बात को लेकर के कि उसको हम लोग सौंफ बोलते हैं, तो सौंफ से उसको एलर्जी थी। तो ये एक बहुत मेजर फैक्टर है कि अगर आपको ये पता लग जाए कि आपको किस चीज से एलर्जी है। तो हमने जब उसकी प्रॉपर हिस्ट्री ली तो हमें ये पता लगा कि वो बंदा कभी राजस्थान का था और राजस्थान से बॉम्बे में शिफ्ट हुआ। तो जितने भी महाराष्ट्रियन होते हैं वो हमेशा खाने के बाद सौंफ का यूज जरूर करते हैं। तो उसको वहां पे Mm. जाकर के वो आदत पड़ी और उसने क्या करा कि हर एक खाने के बाद उसने बहुत अच्छी अच्छी मतलब सौंफ कई सारे फ्लेवर्स में उसने ट्राई किए। और अपने घर में उसने सौंफ के हमेशा परमानेंट डिब्बे रखे हुए थे। तो जो सौंफ थी वो सिर्फ एक एक ऐसे पर्टिकुलर एलर्जिक पॉइंट से ऊपर पहुंच गई जहां से उसको स्किन की एलर्जी हो रही थी। एंड देर वॉज नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ मेडिसिन, हमने सिर्फ उसकी सौंफ बंद कराई और ही इज परफेक्टली फाइन। पिछले 3 सालों से उसको एक बार भी एर्टिकेरिया नहीं हुआ है। तो हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि हमें क्या आखिर करना है, और क्या हमें रिजल्ट देने हैं, और हमारे लिए जो मेन चीज है वो कॉज क्या है। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर शिल्पी, मैं क्योंकि अभी ऑर्गन के सेशंस चल रहे हैं तो मैं सभी लोगों को एक ऑर्गन का एक छोटा सा पार्ट बता दूँ। इसमें ये सब चीजें भी आ जाएगी, अर्टिकेरिया भी, और बाकी उसको कैसे हमें डायग्नोज करना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए, डॉक्टर हेनीमैन सर क्या कहते थे। तो इसके बारे में मैं आप लोगों के अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप देखोगे कि ये एफोरिज्म नंबर 3 है। मेरे स्टूडेंट्स को छोड़ करके कितने लोग ऐसे हैं जो एफोरिज्म के इस सिंबल के बारे में जानते हैं। मतलब ये जो डॉक्टर हेनीमैन सर ने जो सिंबल लिया था, जो ऑर्गन का सबसे मेन पार्ट है, वो आखिर क्या है जिसकी वजह से इन्होंने यही सिंबल यूज करा। कोई बता पाएगा? कोई भी कोशिश करिए। कोई भी, बस बताइए कि जो सिंबल है इसका क्या मतलब है। डॉक्टर हेनीमैन सर ने ये सिंबल क्यों यूज करा, क्योंकि बहुत सारे सिंबल हो सकते थे, उसके आगे स्टार भी लगा सकते थे, हैशटैग भी लगा सकते थे, या और भी कोई चीजें हैं जो लगा सकते थे। इतने सारे सिंबल्स हैं, उसमें सिंबल्स में से सिर्फ उन्होंने इसी सिंबल को चूज किया। तो इसके दो सबसे मेन रीजन है। नंबर एक तो ये शो करता है कि हर एक एफोरिज्म एक दूसरे से कनेक्टेड है।
जैसा कि हमें ज्यादातर कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है और ये बताया जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, ऐसा इसलिए सिंबल यूज किया गया। लेकिन इससे भी ज्यादा मेन जरूरी बात यह है कि सर ने जब डॉक्टर हेनीमैन सर ने इस सिंबल को यूज किया होगा तो उन्होंने इसको एक म्यूजिकल नोट के से लिया। और इसका मतलब एक म्यूजिकल नोट होती है। ये म्यूजिकल नोट का बेसिक मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि जब भी आप कभी किसी पेशेंट को देखेंगे, जैसे अगर कोई आपके पास पेन इन एब्डोमेन लेकर के आ रहा है, जिसको सीवियर एक्यूट एब्डोमिनल पेन हो रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप सबसे पहले उससे ये पूछोगे कि आपका नाम क्या है, आपकी उम्र क्या है, और आप कहाँ से रहने वाले हैं, और आपका एड्रेस क्या है, आपके फोन नंबर क्या है। इसके अलावा आप सीधे सीधे एब्डोमिनल पेन जो सीवियर केसेस है सीधे वहां पे जाएंगे। आप उसके एब्डोमिनल के पेन के बारे में पूछेंगे, उसके पेन को रिलीव करने के लिए काम करेंगे, जो बहुत फास्ट होना चाहिए। तो उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि आप पहले एफोरिज्म से चलो और 293 तक आप एक सीक्वेंस में चलते रहो। उन्होंने ये कहा, कहने का इस सिंबल का मतलब है कि अगर आपको लगता है कि जो फिफ्थ एफोरिज्म है वो किसी ज्यादा पहले लाना चाहिए, तो आप पहले फिफ्थ को लेकर के आओ, उसके बाद चाहे 15th को लेकर के आओ। तो ये सिंबल ये डिनोट करता है हमेशा कि हमें कहीं से भी किसी भी केस को किसी भी रूप में स्टार्ट कर लेना चाहिए, बिना ये देखे। हाँ, अगर आपके पास क्रॉनिक केसेस आ रहे हैं तो क्रॉनिक केस में हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमें शुरुआत से ही केस लेना है, लेकिन एक्यूट केसेस में हम कहीं पे भी किसी भी एफोरेंस पे फिट कर सकते हैं। अब जब हम इस एफोरिज्म को पढ़ते हैं तो ये सबसे प्यारा मेरा एफोरिज्म है जो मुझे सबसे अच्छा लगता है। इसमें जब डॉक्टर हेनीमैन सर लिख रहे थे तो इन्होंने जो सबसे पहला जो पॉइंट था, जो सबसे पहला वर्ड यूज करा, इफ द फिजिशियन क्लियरली परसीव्स। इफ का मतलब आप हिंदी में जानते ही होंगे सब, कि उन्होंने एक कंडीशन लगा दी। मतलब जैसे सब लोग आजकल टर्म एंड कंडीशन के लिए एक स्टार लगाते हैं और फिर उसके बाद टर्म एंड कंडीशन लिखते हैं, तो उन्होंने इफ का मतलब है कि अगर ऐसा हुआ तब, मतलब फिजिशियन ने क्लियरली परसीव करा, तभी आगे बढ़ेंगे, तभी सब कुछ हो पाएगा। तो अगर फिजिशियन ने क्लियरली परसीव नहीं किया, क्लियरली परसीविंग का मतलब है कि अगर यहाँ पे अभी जैसे डॉक्टर मोहम्मद हैं, वो किसी काम से जा रहे हैं और उनको ओपीडी भी करनी है, और ओपीडी में उनके 100 पेशेंट एक साथ वेट कर रहे हैं, तो वो 100 पेशेंट को हो सकता है एक साथ क्लियरली परसीव ना कर पाए। जब उनका कोई एकदम अर्जेंट फोन आ जाए कि डॉक्टर साहब आपको अभी अभी कहीं जाना है, तो क्लियरली परसीव का मतलब है कि जो फिजिशियन है वो उस मोड में बैठा हो, उस ऑरा में बैठा हो, जिससे वो क्लियरली परसीव कर सके। अगर ऐसा नहीं है तो भी आगे की टर्म एंड कंडीशन खराब हो जाएंगी। देन आगे चलते हैं। इफ द फिजिशियन क्लियरली परसीव व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन डिजीज, इन द डिजीज, मतलब कि वो जो डिजीज लेकर के आया है, डिजीज का मतलब यहाँ पे सिर्फ डिस इज का मतलब है, मतलब जो डिस्टर्बेंस है सिर्फ उसी का, किसी बीमारी का नाम नहीं है। डिजीज का यहाँ पर डॉक्टर हैनीमैन ने सिर्फ इतना मतलब बताया था कि दो बाइफर्केशन है, डिस इज मतलब जो भी इजी पाथवे चल रहा था उसमें कुछ डिस्टरबेंस हो गया, तो उसमें कुछ क्योर होने लायक है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी पाथ पे चल दे और आपको क्योर मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने इफ लगा के ही बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन लगा दी कि अगर फिजिशियन ने क्लियरली परसीव करा तो ऐसा होगा, अगर वो जानता है कि डिजीज में क्या क्योर होने लायक है, तब आगे चल पाएंगे। दैट इज टू से इन एवरी इंडिविजुअल केस ऑफ डिजीज, यहाँ पे नॉलेज ऑफ डिजीज की बात हुई, और उसके बाद कॉमा लगा के उन्होंने इंडिकेशन लिखा। इंडिकेशंस का यहाँ पे बेसिकली मतलब है कि जो आपने अभी तक डिजीज की नॉलेज ली है, क्या वो क्लियरली उससे इंडिकेट हो भी पा रही है कि नहीं। मतलब ऐसा भी बहुत सारे क्योंकि अब जो डिजीज आ रही है वो ज्यादातर आइट्रोजेनिक डिजीज है। आप सब लोग जानते होंगे आइट्रोजेनिक डिजीज का मतलब आर्टिफिशियल डिजीज। मतलब जिस डिजीज को आपने पढ़ा है वो क्या इंडिकेट, उसके जो सिम्टम्स हैं वो पर्टिकुलरली उसी को इंडिकेट कर रहे हैं या किसी और डिजीज को भी इंडिकेट कर रहे हैं। तो इसके बारे में हमें पूरी तरह से नॉलेज होनी चाहिए कि आखिर वो डिजीज क्या है। जैसे मैंने अभी अर्टिकेरिया का एग्जाम्पल लिया, तो बाकी सब डॉक्टर्स ने उसको सिर्फ अर्टिकेरिया ही मान करके डायग्नोसिस बनाकर ट्रीटमेंट किया। उन्होंने कभी ये नहीं सोचने की कोशिश करी कि आखिर हम इसकी इन्वेस्टिगेशन भी करा सकते हैं और हम ये पता लगा सकते हैं कि क्यों हो रहा है। उसके बाद इफ ही क्लियरली परसीव व्हाट इज क्यूरेटिव इन मेडिसिन, मतलब जो आप मेडिसिन दे रहे हैं उसमें क्या क्योर होने की पावर भी है या नहीं। जैसे अगर मान लो आपने ये परसीविंग गलत कर दी कि जो मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम आपने किसी केस में निकाली, और आप ये नहीं समझ पाए कि उसे पोटेंसी 6 देनी है, 30 देनी है, 200 देनी है, 1 देनी है, तब भी क्योर पॉसिबल नहीं है। दैट इज टू से इन ईच इंडिविजुअल मेडिसिन, और हर एक मेडिसिन के बारे में आपको ये नॉलेज होनी चाहिए, ऐसी हर एक डिजीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। फिर हम ब्रैकेट में लिखा नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर। मेडिसिनल पावर का क्या मतलब है कि जो वाइटल फोर्स इस समय डिस्टर्ब हुई है या जो भी डिस्टरबेंस इस समय हमारी इजीनेस में आए हैं, या जो भी फिजियोलॉजी
अल्टर अल्टर हुई है, तो क्या उस मेडिसिन में उतनी पावर है जो उसको ठीक कर पाएगी या नहीं। एंड इफ ही नोज हाउ टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू क्लियरली डिफाइंड प्रिंसिपल्स, मतलब जो भी ये प्रिंसिपल्स दे रहे हैं पूरी ऑर्गन के द्वारा, वो उसमें फिट हो रहे हैं या नहीं। अगर वो फिट नहीं हो रहे तब भी क्योर नहीं होगी। फिर उसके बाद लिखते हैं व्हाट इज क्यूरेटिव इन मेडिसिन टू व्हाट ही हैज डिस्कवर्ड टू बी अनडाउटली मॉर्बिड इन द पेशेंट, सो दैट द रिकवरी मस्ट एंश्योर टू अडॉप्ट इट। अगर आपने इतना सारा काम किया तब जाकर के आप कुछ कर पाएंगे, क्योर की तरफ सोच पाएंगे। उसके बाद लिखते हैं एज वेल इन रेस्पेक्ट टू द सुटेबिलिटी ऑफ द मेडिसिन मोस्ट अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू इट्स मोड ऑफ एक्शन टू द केस बिफोर हिम। नाउ यहाँ पे जो बात आती है सुटेबिलिटी की, कि मतलब जैसे आपने आर्सेनिक एल्बम किसी केस पे निकाली और आपने आर्सेनिक एल्बम दे दी, लेकिन पेशेंट जो है वो ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको ये भी जानना पड़ेगा, आपको इस बात की भी नॉलेज होनी चाहिए कि वो जो आपने दी है क्या वो आर्सेनिक एल्बम है या नहीं। क्योंकि बहुत सारे होम्योपैथी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अभी तक भी किसी भी तरीके से हमारे पास कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि अगर आपने बोतल्स पे से लेबल हटा दिया, उसमें से कोई मार्किंग हटा दी, तो कोई भी साइंस ये नहीं बता पाएगी कि वो आर्सेनिक एल्बम 30 है या नहीं। तो बहुत सारी कंपनियां ऐसा भी करती हैं, हालांकि मुझे बोलता है वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं जो आपको आर्सेनिक एल्बम 30 नहीं दे रही हैं। तो हमेशा ये हमेशा अपने मन में लाओ कि अगर आपने मेडिसिन निकाली आर्सेनिक एल्बम 30 और वो काम नहीं कर रही है, तो चेंज द कंपनी फर्स्ट। ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि आपकी जो डोजेज हैं, आपकी जो मेडिसिन है वो वाकई में ठीक से जा रही है या नहीं। तो इसके बारे में फिर ब्रैकेट में लिखते हैं चॉइस ऑफ रेमेडी द मेडिसिन इंडिकेटेड, मतलब जो आपने चॉइस की है वही मेडिसिन इंडिकेटेड है या नहीं। बहुत सारे मेरे पास जब डॉक्टर्स आते हैं ना पढ़ने के लिए, पहले आते थे ओपीडी में, तो मुझे बताते थे कि सर हम तो ऐसा करते हैं कि हमने तो ये डिसाइड करा हुआ है कि वार के लिए ये मेडिसिन है, हमें ये पास सेट है और हम दे देते हैं। तो ये आपको फिक्स नहीं करना है। हर एक मेडिसिन वाट में काम कर जाती है, कभी कभी करके फॉस भी काम करती है, फॉस्फोरस भी काम करती है, मेड्रिनम भी काम करती है, कभी कभी ध्वजा भी काम नहीं करती। तो हमें चॉइस ऑफ रेमेडी और मेडिसिन इंडिकेटेड जो है उसके बीच में एक कंपैरिजन आना चाहिए कि जो हमने चॉइस की है। आप लोगों को सुन के ताज्जुब होगा, एक मेरे पास डॉक्टर आए हैं, उन्होंने कहा कि सर मैं तो देखो सीधे सीधे ये करता हूँ कि जो मेरे मन में आती है वो मेडिसिन दे देता हूँ बस, और जब भी कभी वो मेडिसिन नहीं देता तो पेशेंट ठीक नहीं होता। तो मैंने कहा ठीक है सर, आपका लक है, हो सकता है ऐसा हो जाता है। लेकिन उसके बाद एक बात और बताते हैं, वो कहते हैं कि जब मैं कोई पेशेंट देख रहा होता हूँ तो मैं अपने मन से जो भी मेडिसिन है वो लिख लेता हूँ, लेकिन जब मैं उसको बनाने जाता हूँ तो कोई दूसरी मेडिसिन बना देता हूँ, तो भी पेशेंट ठीक हो जाता है। तो मैंने कहा सर ये तो कुछ आपका लक हो सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे पेशेंट खराब भी हो रहे हो या उनको किसी और तरीके के कोई साइड इफेक्ट आ रहे हो, तो ऐसा करना बंद करिए। फिर मैंने जब उनको ऑर्गेनिक के बारे में थोड़ा बताया तो उन्होंने ये सब कंसेप्ट बंद करे, और तब उनको पता लगा ऐसे लोग जितने भी हैं, हम में से आप में से सब लोग ऐसे होते हैं कहीं ना कहीं एक फेज में आकर के, हम लोगों के प्री ड्यू जो होते हैं होते हैं। मैं इसके लिए कभी मना नहीं करता, लेकिन ये सिर्फ जब ही होता है जब हम लोगों को नॉलेज नहीं होती, मतलब हमें ये पता ही नहीं कि आर्सेनिक जो है वो वाट्स में काम कर सकती है, हमें ये पता ही नहीं कि आर्सेनिक जो है ना वो ब्लड कैंसर में काम कर सकती है, हमें ये पता ही नहीं कि जो नॉर्मल मेडिसिन है सेवाइना भी है वो भी वाट में काम कर सकती है। तो हमें ये बात पता होनी चाहिए, जितनी जितनी हमारी नॉलेज या मेडिसिन का स्पेयर कम होगा उतने उतने ज्यादा हम लोग फिक्स हो जाएंगे। बहुत सारे लोग आते हैं वो कहते हैं कि हम कॉस्टिकन थोजा और गल हमारा तीनों मेडिसिन को एक साथ चलाते हैं, कैसा भी वाट हो ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं उनको बोलता हूँ कि जो वो ठीक कर रहे हैं वो वाट नहीं थे, वो छोड़ थे। तो इसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, हमें मेडिसिन की प्रॉपर डोजेस पता होनी चाहिए। और जब तक साइंटिफिकली प्रूव नहीं हो रहा है बस तभी तक ये चल सकता है, जिस दिन साइंटिफिकली प्रूव हो गई होम्योपैथी उस दिन ऐसा नहीं चलेगा। तो डॉक्टर हेनीमैन शुरू से ये कहते आ रहे थे, जब उन्होंने मैंने इफ से शुरू करा कि आप ये टर्म एंड कंडीशन है क्योर के लिए, अगर ये टर्म एंड कंडीशन में से कोई भी एक मिस होगी तो आपको क्योर नहीं होगा। वो लिखते हैं आगे एज ऑल्सो इन रेस्पेक्ट टू द एग्जैक्ट मोड ऑफ प्रिपरेशन एंड क्वांटिटी ऑफ इट रिक्वायर्ड। और ब्रैकेट में लिखते हैं प्रॉपर डोज। इसके बारे में कौन बताएगा कि प्रॉपर डोज डॉक्टर हेनीमैन की तरफ से क्या थी। हेलो। डॉक्टर शिल्पी आप एक काम करेंगे प्लीज, वो डॉक्टर पंकज सर को लिंक भेज दीजिए। अच्छा ठीक है। हाँ, मेरे व्हाट्सएप से जा नहीं रहे हैं।
अगर डॉक्टर पंकज सर बीच में आ जाते हैं तो हम पहले उनका सेशन करेंगे और उसके बाद इसको हम लोग बाद में फाइनल कर लेंगे। प्रॉपर डोज के बारे में बात चल रही थी, तो प्रॉपर डोज के बारे में किसी को मालूम है क्या कि डॉक्टर हेरीमैन सर के अकॉर्डिंग प्रॉपर डोज क्या है? उसके बाद कॉमा लगा के ये भी लिखते हैं एंड द प्रॉपर पीरियड फॉर रिपीटिंग द डोज। फिर लिखते हैं इफ, फिर उसके बाद कॉमा, फिर उसके बाद फाइनली, उसके बाद कॉमा, ही नोज द ऑब्स्टेकल टू रिकवरी इन ईच केस एंड इज अवेयर हाउ टू रिमूव दैट। अब किसी भी आदमी को अगर छोले कुलचे खाना पसंद है या किसी को शराब पीना पसंद है, तो आपको ये भी आना चाहिए कि आप उस ऑब्स्टेकल को कैसे हटाएंगे जो उसकी बीमारी को क्रिएट कर रहा है। हर एक चीज के बारे में नॉलेज है। उसके बाद भी अगर आपने इतना सब कुछ कर लिया, मतलब आपको, आपने परसीविंग भी अच्छी करी, आपकी नॉलेज ऑफ डिजीज भी अच्छी है, उसके इंडिकेशन भी आपको पता है, आपको मेडिसिनल पावर के बारे में भी पता है, और हर चीज पता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहते हैं सो दैट द रिस्टोरेशन मे बी परमानेंट, मतलब उसके बाद भी उन्होंने मे लगा दिया। मे का मतलब है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि ये क्योर हो जाएगा। तो पंकज सर आगे से मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा जरूर। Good evening, Dr. Pankaj. Welcome, sir. Good evening, सर everyone. नमस्कार। Namaste. Good evening, sir. Ji, should I start? Yes, sir. So, hello everyone. I think last time some 15 persons were there. I think today also some 15 persons are there. So last time we discussed regarding, you can say, the theoretical part, the conceptual part regarding the treatment of skin diseases. So this is the good time today to really talk about uh, the practical part of going through all those things which we discussed yesterday, last Friday, sorry. So just to have a small recap, I told you that how case checking is very important, how observation is very important in case checking, and secondly, that you should be going into the thorough case study of each skin patient, because it's a journal welcoming thing from every corner, whether you believe homeopathy or you don't believe homeopathy, that for skin, homeopathy is the best. This is how the dictum goes in the society. But then suppose if we are unable to deliver, then what? Then definitely this dictum will definitely go into the vein. And yes, this can be further strengthened if we somehow uh, take the very deep case checking, as I discussed last time. Then I gave you certain examples. Today, I'm going to give you certain clinical cases, and I'm going to tell you certain tips for skin diseases, which are like you can say sure shot uh, result oriented tips as I observed in my practice, that I am going to tell you. Sometimes what happens in the skin diseases, you don't get, after a very thorough case checking, you don't get symptoms, you don't understand what exactly is the symptom on which I should prescribe. That's a very, very difficult thing which every doctor face in the clinic, including me. So every case exhibits its symptom either in the whole personality or in a just local area, as we are discussing skin, so only in the skin, only in the hair, only in the nail. So once you start case checking, and as after going through the case for half an hour, 45 minutes, you come to know that as such in the whole case, we are unable to trace back the past history of the patient in detail. Yes, it happens in the cases.
Secondly, what happens? The generalities about the appetite, about the sleep, about the thirst, about the desire aversions, nothing significant is really available in the case. It's not that I am unable to ask properly. Sometime after really going into much of the detail, patient is showing as such nothing special in the craving, nothing special in the sleep, dreams, or whole of the generalities. You don't get something on which you can really rest upon your prescription. What remains? As I told you last time, one-sided condition. In the one-sided condition, what is now available before you is something which you should look for and prescribe. Here, I tell you, the repertory is the most important tool on which you can prescribe. I show you certain examples. If you have Kent repertory, you can just open, or if you have on your mobile and all, you can just open. Let me just, I'm going to tell you, this is how I solved a case. I was trying to get the pictures of the case, but somehow some work and everything is going on completely at my place. Everything is in chaos. I could not really trace them back. But I'm going to tell you a very, very important thing, how to really prescribe. So in the head, go please in the hair. Here, baldness. In the baldness, there is a general rubric which is where we get certain medicines. Then in the sub rubric, we get young people. Baldness, young people. Only two medicines, Baraita carb and Silesia. So in Kent repertory, skin condition or any other condition, whatever may be the name of the disease, whatever may be the system affected, but wherever you get one or two remedies, it's a gold treasure in the Kent repertory. After only remember two things. After going into the case, no significant symptomatology or prescribing indications available in the personality of the patient, in the mentals, in the journals. Nothing is available on which you can rest upon your prescription. This is the best way of going into the prescribing, that in Kent repertory you look for such rubric or sub rubric where one or two medicines are given, and it is what is something very important. So what I am telling you, hair, baldness, young people, one, I think some 24 years old young man, he used to come to me for his baldness. I am telling you, this whole area, this whole big patch here, bald patch, and one is alopecia kind of thing. It is not alopecia, it's a baldness. I like, no hair will come. I wish I could show you the pictures, you would be able to appreciate better. But after the whole case taking, nothing was there on which I can really think of prescribing. So I located this rubric. Here only two choices, Baraita carb and Silesia. So only thing is that I need to make it confirm whether it is Baraita carb. So what I concluded here is, in this case, that the expression of the vital force is so, you can say, dwarf, is so dumb that it is unable to express the symptoms. And all right, both remedies are chilly, but then as such, patient was not that very shy or something like this, which is there in both the remedies. But then as such, patient was unable to express the symptoms and chilly, and I selected Baraita carb. And after Baraita carb, this baldness has gone, completely gone. This is
importance I am telling you, the value I am telling you, the rubrics or sub-rubrics of one or two remedies. I'm only picking up certain examples which I used. Here are many, and I'm sure you also must have noticed, you also must have tried in your clinic. But what I am impressing upon you today is single medicine rubric or two medicine rubric in Kent's repertory you can rest upon, you can bank upon, you can trust on this. But provided in the whole case taking, no such significant prescribing indications available in the personality and in the generality of the patient. This is a provided condition which you should not forget. Let's go further. Go into the extremities. Extremities, extremities eruptions. Elbow. Look for eruptions, elbow. Eruptions, upper limb. In the upper limb, you locate elbow. Now, something very important to learn. Extremities, eruptions, upper limb, elbow, certain medicines are there, but especially if blisters are there, there is only one single remedy, Crotalus horridus. And mind, it is just in one number. Second thing I learned in my clinic, that even if a single remedy in this rubric is just one number, even then it is a golden symptom. One patient, young, I think some 40-45 years old female, she came here and she told me that thrice she had it, and again it is now fourth time this blister like eruptions came on the elbow. Now what she did all the three times, she got it drained and took antibiotics and rest for certain 15-20 days, and she became all right. But then after some couple of months, recurred, three times recurred, fourth time she came into homeopathy to treat. Now you remember Herring was a surgeon, and he was treated by Hahnemann for his gangrene in the index finger, and he was given arsenic, and he became all right. He saved his right hand index finger with homeopathy by Hahnemann by prescribing arsenic, and he used to go in the pubs and bars and he used to just jump on the table and shout that how I got cured with new system of medication. He said after being surgeon, he said that draining the abscess or such things is harmful. You should treat them in internal medications. So this is the case I could really experience what and why Herring told this. Here in this case, I found this symptom. As such, I told you no symptom in the personality, no symptom in the generalities, only this blisters on the elbow. After Crotalus horridus 203 doses, third day, no drainage, no dressing, nothing is being done, and just got dried up and just went off. And since then, I'm talking some 10-15 years back, and since then it never appeared. Crotalus horridus is such a very important medicine. Sometimes, you might find the medicines which are rarely known for skin conditions. One mark medicine. Sometimes we feel one mark medicine, what is the importance? No, my dear friends. Single remedy rubric, 1 mark is like 5 marks of Bonnie It is such an important thing.
So this is what I really learnt with this. And on this indications, I applied the Bonnie-Wesson method analogy. I utilized wherever I found eruptions on the elbows, even warts on the elbows. And as such, if we are not really going to get something specific for the warts, here I prescribed Crotellus horridus. Even warts went off. So this is how I learned the importance of Crotellus horridus in this eruptions of the elbows. So till then, I just recall certain more cases. In the meanwhile, for today's discussion cases or last class, if you have any questions, you can write me questions. Dr. Shilpi, any questions if you got earlier or even now, you can ask all the doctors or the students, those who are attending. If you have any question, let me just find out certain more cases and remembering those which I treated. Yes, anyone have any questions to be asked to Dr. Pankaj? Anything related to what was done in the previous session and today, so whatever he has done till now? Then in the meanwhile, let me just, I just got remembered. Recently, I noticed in the last 2-3 years, molluscum contagiosum, many cases are coming. I think you all must be getting such cases in your clinic. I think you all must be understanding this molluscum contagiosum. You can just open the Google and look at it in the images, that how does it look like. But I'm finding many cases, even a very young girls of 13-14 years, even a small child of 1 or 2 years. I got many cases of molluscum. So you all understand that molluscum is a viral illness. It's a viral disease. The diagnostic point is there is a papule, and on the top of the papule there is a small dig into it. Small something is punched into it. It's like this. So that is what is the indication for diagnosing it as a molluscum. And what happens if you don't treat it? Start with a very small pinhead like papule and slowly grow and become like a grape. It becomes this big. And in the dermatology, the treatment is they will pluck each one of the molluscum papule. They will just remove it by kind of very minor kind of surgery. They do it, and somehow they apply some medication in dermatology, which is having cantharis, our cantharis or something like this. But so far, I think some 20-30 cases I treated of molluscum. What I noticed that nothing specific works. If you try, why I'm saying certain things. Just now I told you specific, but molluscum, as soon as you try specific, even of single remedy rubric kind of thing, it does not work. You have to be very holistic treating molluscum. It is something very important to understand in the mind, that you can't treat certain skin diseases, skin conditions, just on the basis of what I told you. And as such, you will get the other area symptoms, like I got it treated with Pulsatilla molluscum. I'm talking about Pulsatilla, but
not that specific symptoms of the molluscum, but specific symptoms of the personality and the generalities. Patient is molluscum, patient is very weepy. What happened to me? And weeping. Female patient, young lady, and no thirst. No thirst and weeping. Pulsatilla, weeping, everybody knows. But pulsatilla weeps easily is something only pulsatilla. Easily is something important to understand. Weeps easily, anywhere, anytime, for any reason. Weeps easily. And no thirst, whatever may be the weather, no thirst. Just on these personality symptoms and generality symptoms, I prescribed pulsatilla. 2 weeks, all gone. One 13 years girl, she got whole face, whole back, neck, and very small, you just ignore. What is the need to treat? It is so small it starts with. Again, I tried to locate. First of all, you cannot make out exact location because it is almost whole face, neck, and the skin on the back. It's almost the whole skin covered, you know. Here I noticed this young lady, 13 years, she cannot tolerate hunger. Means as soon as she is hungry, she wants something. If food is not ready, give me something. Secondly, palms and soles very hot to touch. Third, very argumentative. For anything, very small thing, she's very argumentative. When I say argumentative, I mean she has lot many points to tell how she is right. Argumentative, I'm not talking quarrelsome. No, quarrelsome is different and argumentative is something different. When you argue means that you're not fighting. Argue means when proving your point, you're giving certain points, certain explanations that why my point is all right. Kent writes about sulfur, argumentative genius. So argumentative genius. Very small kids, and they talk a lot, and they have so many reasonings to tell about what they are thinking and what they are talking. All these patients, most of the important indication is sulfur. And second most important thing, sulfur, what I noticed in this 13 years small girl, she cannot be alert any moment. All the time lazy. Standing is the worst position. This is the explanation of standing is the worst position. So this is how I prescribed sulfur, and I was surprised that sulfur 200 worked very less, 1M better. But then 10M was much better to really prescribe here. So in molluscum, you need to be prescribing on the patient personality and generality. Second is that you need to be little more on the potency side, maybe 200 and above. Third is you need repetition in molluscum. Just with one dose, it does not go. Even I am telling you this 10M sulfur, 10M also I repeated quite frequently, once a week or something like this. Quite frequently I repeat. So this is something very important to really understand that how in molluscum, if you really want to treat them, you cannot just look for anything specific single remedy rubric. I did not find. If you find, let me know. Let us learn from each other. Right? Then
कुछ याद कराओ और भाई दीपक। जी सर। सर ऐसी एक जेनेटल वार्ड में सबाइना पड़ी है। हम्म। वैसे परफेक्ट सर। अच्छा, हाँ कोई कोई रूब्रिक है या कोई सर, सिर्फ रुब्रिक ये? है। नहीं सर, रुब्रिक है। अच्छा, क्या रूब्रिक है भाई, जरा खोल के देखते हैं रिपर्टरी में। सर जेनेटल वार्ड्स थे, और मैंने उसको मार्क किया हुआ है, क्लिनिक पर रखे हुए सर। मैं कल चाहे इसकी फोटो भी भेज दूंगा। अच्छा और ठीक है, आप भेज इसका। देना। जी। और भी भाई ढूंढते हैं कुछ केसेस। One very important thing in skin cases, whatever may be the name of the disease. Recently, today evening, I just saw one case, eruptions. It's a weeping eczema, but then the discharge, watery discharge, starts from the sunset and it gradually increases as the night increases, the watery discharge increases. It is like aggravation with the rhythm of the night. As the night is going further, aggravation is going further, and eruption look like copper. The best thing is have some coppery plate or some coppery utensil, just look at it and compare it with the eruptions. Then only we can learn coppery eruptions. Coppery eruption is typical syphilitic eruptions, but we need to prescribe on indications. Na? So if aggravation of itching, watering, whatever is the thing, if it is with the rhythm of the night, it is only and only syphilinum. So I just gave syphilinum 203 doses today to this one old lady. She is suffering with this weeping eczema. So this is what I have been doing in my clinic, just looking for the indications in each and every case of the skin, and very very difficult to treat. Now in children cases you will get atopic dermatitis, very very difficult to treat atopic dermatitis, because so much of itching on the cheeks. First of all, it is bilateral. Mostly it is bilateral. There'll be a itching on the cheeks, itching in the fold of the skin, maybe axilla, maybe elbow folds, maybe knee folds. You check that in very small child, and this is the condition. Again, another condition you cannot treat with certain specific single remedy rubric. No, it is not possible. What is the need? You should be looking into the personality. You should be going into the intrauterine life history of that patient and look for the indications in those areas. But you cannot really treat with one specific remedy. See, the beauty of homeopathy is, as patient is expressing his symptoms, you should be able to perceive that. In molluscum, in atopic, and many such conditions where symptoms are more expressive in the personalities and in the generalities of the patient. The individualization is not at all there in their skin symptoms mostly. One child I treated atopic dermatitis, I can remember. I gave this patient thyroidinum. All the both sides of buttocks, cheeks, and especially the area was buttocks, which is terribly, itching and eruptions and all that. The most important thing what I noticed in this case about thyroidinum,
First of all, in the intrauterine history, patient mother was in lot of stress. Lot of stress means the problem was she cannot say anything. She cannot outburst her stress. The home and social conditions were there like that. And she was craving sweets and cold drinks, cold water, cold things. And most of the time, the female, she was telling that she used to be having a very cold skin to touch. At birth, child suffer with jaundice. All what I am telling, all indications of thyroidism. Child suffered with jaundice. And thereafter, maybe 1 year or 2 years, this child started with this. And it generally happens, everybody is going and hitting the best dermatology clinic. And when they get fed up, they look for a homeopathic doctor. This is how patient comes to us. So we are having more challenging cases. And most of the thing is that definitely we are much cheaper than all those dermatology doctors. Just a lighter note I'm talking. So I noticed the child also was expressing the similar kind of personality symptoms. Used to be very stressful for the studies or academic things. Skin was cold to touch. And lot of craving for sweets and cold things, cold drink, cold water, cold, whatever, milk, cold, like this. And in this case, I prescribed thyroidism in LM potency because they were applying something, not applying something, they can't stop this. So these are the things where we can think of LM potencies. Slowly and gradually, it took some 4 or 5 months to really get all right. And it has completely gone. This patient is not really seeing me anymore. They became all right. And must be that child is now grown up. So this is how a very, very important indication to prescribe thyroidinum in atopic dermatitis. I must tell you, the thyroidinum is one such important medicine which is for various kind of allergic manifestations. And we understand atopic is a very, very deep allergy, very, very deep induced allergy. When we talk allergy, allergy comes by external source or maybe from the internal source. Atopic dermatitis is your body, the patient's body inside creating an allergen, and that is why this is happening. As such, you can't make out this food or that food is really affecting. Then let us talk some difficulties in the cases which is showing and making us a failure. If we talk skin diseases in children, most of the skin conditions, skin diseases, they come after the vaccinations. I would urge all the doctors listening me, you please read Thuja in Clark Medica, and especially the initial pages, introduction kind of thing, what Clark writes. And he explains that what happens when you give any kind of vaccination to the small child. Most of the cases, it is expressing in the form of skin disease. And this is good. In cases where no such skin eruptions comes up, those children for certain weeks or certain days, they become very dull. And sometimes we feel this child is not good, or he's not healthy, or he's not really feeling good.
maybe got emotional, maybe somebody scolded the child or something, but not really that. Without any reason, a child is dull. Please go into the history, recently got vaccination of any kind. If after vaccination, any such allergies or any such skin disease or itching or anything comes, in children cases, I think we all homeopathic doctors should look into the one very, very important and but sure shot symptom in cases of children, that is sweat. What kind of sweat? In Thuja, you read Allen's, 5 kind of sweat symptoms are there. Most commonly, we find sweating in the palms, sweating in the soles, maybe palms and soles, head. Herring writes, sweating on the uncovered parts, head, palm, soles. It is mostly uncovered parts. This is one kind of sweat. Another is sweat in the axilla. Another is sweat in the thighs, in between the thighs, in the scrotal region, in the groin area. This is another sweat of Thuja. And only in the covered part is also Thuja. So always look for the sweating symptoms in cases of children, skin disease or whatever may be the name of the disease. But look for the sweating symptoms and you will notice, yes. And with that you confirm when everybody is dining, kuch kha rahe hain, this small child, this whatever, he is inclined towards the onion. Just picking the onion and eating. See, you every time you can't make out craving and aversion in a very simple way. Only certain questions, certain observations, certain remarks by the people around, we don't understand. This child every time looking for onion is trying to catch it up. Craving for onion, this is how one way of finding out. So this is something very important to really understand, that how we can prescribe Thuja in such cases of atopy or such conditions. Then another important condition is acne. Again, I am telling you, whatever you do, acne means patient's personality. The younger age group of 17 to 23, 24, these age group people, they are suffering with acne. And this is the age when we can't take acne as a medical disease. We take acne as a cosmetic issue. But it's a patient's thinking. You don't get budge to patient's thinking. Don't try to make him understand, but then at least we all doctors should understand it's a medical disease. And homeopathy is a designer medicine which not only cures you but makes you beautiful. It improves, it really brighten up your looks at the same time. Not only cure from inside. So I call it as a designer medicine because you have to individualize. So in acne conditions, recently one patient who is coming to me for acne, young person, I think maybe 25, 24, 25, and very tall, handsome. He's an architect by profession. All right, he's looking after his job, and a lot of dust and everything are there.
acne is a very small blackhead or whitehead up to the cyst. It's a one complete spectrum in the acne. And he gets cystic acne, cyst-like condition. It's a so severe condition. Before coming to me, he was seeing best of the dermatologist. When he started coming to me, I watched him, I found he has got extraordinary musculature. So, are you going to gym? Yes, I'm going to gym. So you see, all gymming young guys, they are into the fancy of getting, very big biceps and all such muscles. So for getting all that, they used to consume lot many uh, proteins and lot many hormones. I inquired this young architect, what are you using? And he told me every damn hormone he's taking. Testosterone he's taking, many steroidal kind of things he's taking, and he just wanted to be like this. I see, before prescribing, it took me 1 hour to make him understand that you are an architect. You're not going to be a model, or you stop this architecture business and you go into the modeling, you go into wrestling. It makes sense. But you must be going gym, but then don't use all this. He's taking testosterone, thereafter the gym person telling the side effects to be treated by this medicine, and he is consuming so many medicines. I make him understand. He stopped all those things. And typical personality symptoms: red lips, very argumentative, hungry, cannot tolerate, hot palms, warm palms and soles, very, very, very hot palms and soles. I prescribed sulfur, 200, just 3 doses. And in a week's time, it just went off, all the acne. And he thought, all right, I became all right, very happy. Sir, you are a magician. And started going gym. And after 1 month, he came, sir, again, all have come. Okay, so what are you using? He said, I wanted to have this, so I had all these hormones again. So I made him understand, either you do your all these things and mess up your internal system and stop my medication, no treatment from my side, or you stop those and take my treatment. And I hopefully that after making him understand, he just stopped for now. I don't know, again he will get a flash to get all those, and he's much better after the homeopathic treatment. At least he is out of the cycle of hormone, acne, a lot many antibiotics and everything. Why he stopped and coming to homeopathy? Because one day he suffered with very severe abdomen pain and he has to be admitted, and they could not really find out something, but then some kind of swelling in the ileum region, but no typhoid, nothing like this. But then there was certain kind of swelling and inflammation in that area. So he got really scared and he stopped, and he made my point to understand not to do all these conditions. So this is something very important cases which I immediately gathered from my memory library to discuss with you all in skin conditions. And the basis, the prescribing points which I really tried to discuss with you everyone, to understand exactly that how do I work in my clinic for skin conditions. But there are certain failures in the skin conditions. Failure is one, this cosmetic issue. Failure is female skin conditions, very difficult to be treated, because in all female conditions
we get fail because of cosmetics. You study cosmetics, you will find lot many heavy metals are used in the cosmetics. Maybe eyelashes, maybe lipsticks, or those. You read all these things. See, if you want to be a good homeopathic dermatologist, you have to make a very good study of cosmetics, or we need to face the failures. Second difficulty is that patient wants, today I should take medicine and tomorrow I should be all right. In the skin conditions, they want these kind of things. And sometimes it is necessary, like urticaria. Urticaria is one such condition. How can you really tolerate that? I'm not saying homeopathy is slow, but this is something very important in urticaria that we should be able to prescribe instantly. Here, in this condition, the modalities in the acne, in the urticaria is very important. Look for modalities. Again, skin chapter, you go into the eruptions, urticaria. You will notice mostly so many concomitants are given and so many modalities are given. So going into the rubric and sub-rubric, you will be able to notice that what kind of symptoms are listed. If many symptoms are modalities, you can easily understand that this condition needs modalities to be prescribed. And in condition where you get many concomitant in the urticaria, you look one very important thing, and I treated some few cases with that modality, with that concomitant. If you have repertory, just open skin section skin, eruptions. In eruptions, go for urticaria. And in urticaria, just look morning, afternoon, all the sub-rubrics. Urticaria alternating with rheumatism. Urtica urens. We prescribe urtica urens in many such cases of urticaria. But if you find it is alternating with the rheumatism, pain in the joints and muscles, it is alternating with. I noticed in 3 cases where urtica urens is marvelously, it works, marvelous. Then, all right, APIS, everybody know, everybody really experienced. In one case, I prescribed Kali iode in the urticaria because as such, no such modalities, but patient was extremely hot and extreme craving for thick milk. Means milk with lot of malai and everything, all those things, making the milk very thick. And it is better to have thick milk but cold milk. So that was the indication on which I prescribed Kali iode. You read boric. Boric gives very good indications about urticaria. I can't immediately remember, but then these are the points I noticed in that case and read boric, and I found all those conditions. Then few cases, what I immediately now remembered is blisters in the soles. There is a medicine, ranunculus bulbosus. It's a kind of herpetic eruptions. And in the soles, when it comes, very important medicine, ranunculus bulbosus. Again, I would request every one of you to ranunculus bulbosus, read boric. And again, here it is very specific location wise. Then herpes zoster. I've treated many cases of herpes zoster. NASH,
E.B. Nash, if you read Rustox, he says one very, very important thing. When in a case of herpes, you cannot understand what is the medicine to be prescribed, you better give Rustox. This is how Nash is writing. You imagine what actually he meant out of this? That Rustox is such a great and important medicine for herpes. So always look for at least chilliness, at least better by warm. And I immediately remembered with this that one patient came to me, the whole skin suddenly came up with eruptions and he was in a very terrible pain and itching. I can't really remember what was the disease and all. And only thing he told me one modality, that I want all the time to pour the intolerably cold warm water, almost hot water. He used to get such a pleasure, means he used to get such an improvement with the hot water bathing. Only medicine is Rustox, Rus Viridi. There is a Rustox one medicine and Rus V. It's another medicine. Better by hot bathing. So herpes, I always ask one very important question: pain, burning, stinging, better by cold or better by warm? Better by cold, Apis mellifica. Better by warm, arsenic album. And it's a sure shot result. And I noticed in herpes, always go into 200 and above potencies. What is my learning in my clinical practice, that all kind of viral conditions, mostly 200 and above potencies, they work and they need repetition. So herpes is something very, very important, and you just pick herpes in a very early conditions, in a very early hours. That is the success. Means when it just get flare up and the whole nerve section is affected and blister formed, and then we will diagnose herpes, this is something too late to prescribe. Patient's expression that he has certain area somewhere in the body, the one area is affected, getting redness, and there is a stinging, burning. Enough, herpes. Immediately modality, immediately medicine, 200 potency, repeated doses, and it just get aborted. And recently I used in like this patient, old man, and he just told that this is how, as I described you, in a very small area there is something reddish and some stinging, burning, and he was unable to tell the modality. I remembered Nash. When you don't understand, give Rustox. And I gave Rustox because the family, whole family, I know them well. So I know the whole family is chilly. Rustox 200, repeated doses, 1 hourly. 24 hours, everything all right. Then one patient, she came with severe pain in the tongue extending to the throat. When I examined, I found there is one blister kind of thing on the tongue. I went into the Kent repertory, mouth, pain, tongue extending to the throat. I think Nectramure was the medicine. And I prescribed Nectramure 200 few doses and just went off. It was herpes, oral herpes. And the indication was
nectar mu. So like this, you must be having many cases. I can means keep on talking and I could be remembering number of cases like that. But I would urge every one of you that simply looking for name of the illness and there should be a medicine for that. This is not happening now in the allopathy. They are also going very, very specific. So our system is really the one which is very, very designer system, that you should look the patient, go into the detail, find out the indications, prescribe, and watch the patient. Keep in touch with your patient. See, the most important tip for today for every one of you, that keep a close touch with your patient. I'm not saying that patient should bother you all the time, but you should make him understand that I'm just a call away. This is something very important, required nowadays, especially in North India. Because in North India, doctors are quite detached from their patients. This is what my feeling, I may be wrong. And patient feels talking to a doctor is a very difficult thing. Go to his reception, take time, sit for 1 hour, 2 hour in the clinic, then only he will see, and he will see for 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. But my way of practice is I just keep a very close contact with my patient. Every patient of mine have got this feeling that you are just calling. So skin conditions, they keep on changing very fast and they need lot of assurance. I'm not saying that every time you change the medicine. No. When you prescribe on indications, sit on your medicine. But patient needs assurance. Assurance is a very, very vital and very, very strong medicine. Who will give assurance? Physician only will give assurance. Doctor may not give, but we all are physicians. Assurance is a most important booster medicine, most important placebo, required by every patient, especially the skin. They need lot of assurance. They need lot of confidence to really continue with the treatment. They will be all right. This is something very, very important. So any questions now? I think quite long. Deepak? जी सर, क्वेश्चन तो आपके केसेस में जनरली जरूरत नहीं पड़ती सर, आप इतने स्लो और आराम से सब कुछ बता देते हैं। आई डोंट नो, मुझे लगता है दो ही तरह की बात होती है, या तो पूरी बात समझ में आ गई या तो कुछ भी समझ में नहीं आया। नहीं सर, हमारे कोर्स से तो मतलब मैंने जो थीम रखी है उसमें से ये है कि अगर एक लेक्चर में आपको एक बात भी समझ में आ गई तो समझो काफी है। तो मैं तो ये नहीं चाहता कि पूरा लेक्चर मतलब मेरा खासकर मेरा पूरा लेक्चर ना समझे, लेकिन सिर्फ कोई एक बात भी अगर समझ में आ जाएगी तो हम लोग ठीक है। कम से कम जो Whosoever है। listening me, at least write me one comment that whether whatever I spoke to you today and in the last class, do you feel that it is really helpful to you? Yes or no? Looking forward for your messages. Yes or no? Is this really useful or not? Are you able to match with your expectations after joining this course or class or this webinar? So Meenu Bhargava saying really useful. Sakshi Garg saying yes, it is useful. Manvi Sharma saying yes, sir, it was very helpful. So at least some 4 persons answered me. Thank you very much for every one of you. And I expect, yes, one more. Dr. Guneet Pal Singh is saying that yes, it is useful. Yes, very good, Guneet. And I believe that every one of you must be benefiting
with whatever the classes going on this platform. And any more questions you can write later on. I will get and I will be answering you all. And Acha, Minu Bhargava is asking something. Good. Can you tell something about freckles? Ah, I understand. See, what I understand freckle is, my understanding of freckle is mostly found in females. And you can say that freckle means that the cloud came on the face. Cloud in the life, in the surrounding, in the situation of the life. A lot of cloudy situations are there in the patient's life. And because of that, the MSH hormone, melanin stimulating hormone, it somehow very qualitatively, stimulated in such a way because of that stressful condition, and that it starts showing this. And all these blemishes and freckles, they come. So, if you're Dr. Meenu, if you're asking for that, what could be the medicine for that? Again, I'm telling you, any conditions which are connected with the stress of the patient. And here, no specific will work. See, freckle patient, they don't get any answer from anywhere. Only way is look into the life of the patient. See, many of the females are there in the today's session. I just try to make you understand one thing. Mostly by jokes or by any ways, it is generally said that it is really very difficult to understand females. But the reality is that if you really understand the what exactly is the female is one such personality which is really looking forward, which is she imagining, but at the same time she will not utter, she will not say, she will not accept anything. I'm not saying in a very personal relationship, I'm saying for anything. This is what is a female. There are certain stories, but then I think that will be taking long time, so I'm just not going into that. But then now in today's scenario, because the whole world for a very, very longer time, it's a man dominated world, and man man has almost recreated the female. And female, by and large, as a half of the human race, is struggling to come out of all these recreation. This manly dominated world has not allowed female to really bloom of its own. It's a very journal problem for last some 5,000 years for the females, and it is really giving a toll on the female. And in that, every female experiences a peculiar difficulties and peculiar cloudy situations in the life, and they start expressing on the cheeks, freckles. So my advice is, Dr. Meenu, please look into the life of the person, of that female having freckles, and you will get a clue.
and that can be corrected. But then she needs lot of assurance, lot of counseling with indicated medicine. That don't give anything to apply. It does not work. Rather, it harms. Don't do that. So I got one more question or comment. Muhammad Muzammil. Hi, good evening. Really happy to learn from peers like you all. Thank you so much. Amazing way of explaining in simple language. Thank you very much, Muhammad Muzammil. Uh, I tried to make it very simple so that it should be like honey to simply go into your throat. It should not be very difficult. So, any more questions or anything? Is any specific protocols for different kind of skin issues? Yes. See, I tell you, how do you elicit the protocol in homeopathy? In Kent repertory, all the skin conditions you go, and every skin condition you look all these rubrics and sub rubrics. What is more? Modalities are more. That means, as I told you, in urticaria, modalities are more. So in urticaria conditions, modalities are the sole point which you should look into to really help the patient and quickly help the patient. So like this, in every condition, if you really study the repertory, you will be able to make out where certain new, like molluscum and all such conditions, which are not really there in our literature as such with the name of molluscum, because maybe earlier it was not seen much, and nowadays it is so much available. At least I am getting in my clinic so much of molluscum cases, so I don't find any listing there. So all those conditions means you have to go into the generalities and personalities of the patient. This is how is the very simple way of eliciting the protocol. You can make your own according to your cases. Any more questions, please? Because allopathic is dominating globally because of their way, even if it is not guaranteed modern medicine. See, I understand this. By certain ways you can dominate, but with this domination you are unable to give the answer to the patients. See, homeopathy and Hahnemann's organon, right from the first aphorism talks the mission of the physician is to cure. But if you look into the allopathic side, they completely remove the word of cure. They say manage. How to manage diabetes, how to manage urticaria, how to manage eczema, how to manage atopic dermatitis. Manage. Because don't talk about cure. How to live with the disease, they teach you. But then society in the human race now understanding that they don't have answer. They're looking for alternatives. In world over, they're looking for the alternatives. So should not be influenced by all these gimmicks which the other therapies are playing. Just simply work with your principles, with Ognon, with the spirit of Hahnemann. And homeopathy has picked up because of this and keep on picking up. Right? Thank you so much, everyone. So thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much, sir, for a wonderful session. Thank you. I know everyone has benefited a lot from your experience and your
way of explanation. Really, thanks a lot, sir. Thank you very much. I make my apologies that I could not present with the pictures and everything because of my own situation. I am into the construction of my home, and my clinic is somewhere, and my home is somewhere, and work is going somewhere, and that is why all these things happening. I hope whenever you're going to do something more next time, I'll be more organized and with all the presentations and everything. And I hope every one of you must have enjoyed whatever you're doing in this program, and especially from my classes. And I'm available to every one of you anytime. If any questions, please convey. Thank you so much. Thank you very much, everyone. Thank you, sir. Thank Thank you, you, sir. sir. I can Thank you, sir. understand your situation because when I met you, you are everywhere you are there. So at the clinic, at the home, at the rented home, so everywhere you were there. So I can understand. But thank you so much, sir, for giving your precious time. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, Mm. sir. Thank you, Dr. Shelby. Thank you, Yeah, Dr. thank you, sir. Deepak. Bye. Thank you. हाँ जी, Yes, तो सबका Dr. सेशन हो Deepak, गया। I think अभी सब लोग मतलब पढ़ना चाहते हैं थोड़ा सा 5 मिनट का, या फिर मैं अगली सेशन में उसको कंप्लीट कर लें। आई थिंक टाइम हो गया है। या तो आप अपना वो एफोरिज्म 3 कंप्लीट कर लीजिए मेरे ख्याल से। जी जी। अब बस थोड़ा सा ही बचा है। मैं आप लोगों को बता रहा था हम्म। प्रॉपर डोज के बारे में। तो प्रॉपर डोज जो डॉक्टर हैनीमैन सर की तरफ से प्रॉपर डोज थी, उसका मतलब था कि एक पॉपी सीड साइज जितना एक ग्लोब्यूल, लगभग 10 नंबर का ग्लोब्यूल, जो आज की डेट में 10 नंबर का ग्लोब्यूल है, उस ग्लोब्यूल को आप जो भी आपने इंडिकेटेड मेडिसिन बनाई है, या जो भी आपने इंडिकेटेड मेडिसिन निकाली किसी पेशेंट की, उस डायल्यूशन में आप उसको डिप करेंगे और उसको एक ब्लॉटिंग पेपर पे उसको ड्राई कर लेंगे। और उसके बाद तकरीबन 30 ml में उस ग्लोब्यूल को डालेंगे और उसमें से थोड़ा 10 स्ट्रोक लगा करके फिर आप उसको 1 स्पून देंगे। दैट इज कॉल्ड एज द प्रॉपर डोज फ्रॉम डॉक्टर हेनीमैन सर। तो मुझे लगता है कि शायद आपने जो ये प्रॉपर डोज के बारे में आज जाना होगा, शायद ही कोई करता होगा ऐसा कोई प्रॉपर डोज कोई देता हो। लेकिन डॉक्टर हैनीमैन सर का यहाँ पे 6th एडिशन में प्रॉपर डोज का एक्चुअल मीनिंग यही था। लेकिन सर ने जब जैसे मैं पूरा एफर्ट बता रहा था, प्रॉपर डोज देने के बाद भी उन्होंने बताया एंड द प्रॉपर पीरियड ऑफ रिपीटिंग द डोज। मतलब ऐसा नहीं है कि आप हर घंटे पे रिपीट करेंगे, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी डिजीज की सीवियरिटी कितनी है और आपकी मेडिसिनल पावर कितनी है। ऐसा ना हो कि जो मेडिसिनल पावर हो वो बहुत ज्यादा हो और उसको रिपीट करने से आपको नुकसान हो जाए। तो आपको एक प्रॉपर पीरियड जानना होगा कि डोजेस कैसे देनी है। एंड इफ फाइनली ही नोज द ऑब्स्टेकल टू रिकवरी इन ईच केसेस एंड इज अवेयर हाउ टू रिमूव देम, मतलब आपको सारे ऑब्स्टेकल्स के बारे में पता होना चाहिए सो दैट द रिस्टोरेशन मे बी परमानेंट। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि उन्होंने स्पेशली ये कहा, मे जब लगाया तो इन्होंने कहा कि जो भी ऊपर टर्म एंड कंडीशन है सारी, अगर आपने पूरी तरह से फुलफिल कर ली तब भी रिस्टोरेशन जो है मे बी परमानेंट है, ये फुल्ली परमानेंट नहीं है। तो इसलिए अपने दिमाग से हमेशा ये परमानेंट क्योर वाली है, ऐसे जो भी होम्योपैथी बताते हैं आपको, जो ऐसा पढ़ाना चाहते हैं कि भाई परमानेंट क्योर कर देंगे, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। बहुत बहुत कम ऐसे केसेस हैं जहां पर क्योर जो है पॉसिबल होती है, उनकी डेफिनेशंस बिल्कुल अलग हैं। उसके बाद वो लिखते हैं देन ही अंडरस्टैंड हाउ टू ट्रीट जुडिशली एंड रेशनली एंड ही इज अ ट्रू प्रैक्टिशनर ऑफ हीलिंग आर्ट। मतलब अगर आपने पूरे एफोरिज्म को कवर करा और आपने क्योर की तरफ लेके गए, तब आप एक अच्छे प्रैक्टिशनर और एक सच्चे प्रैक्टिशनर कहलाए जाएंगे। वरना आप बाकी जैसे सब डॉक्टर्स हैं वैसे ही हम लोग हैं। तो इस एफोरिज्म को मुझे पढ़ने में हमेशा इसलिए अच्छा लगता है, हर एक लेक्चर में मैं इस एफोरिज्म का जिक्र जरूर करता हूँ, क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं हमें उस पर कितना टिका रहना चाहिए। और कुछ ऐसी प्रैक्टिकल चीजें हैं जिनको आज हम अडॉप्ट नहीं कर सकते। मतलब प्रॉपर डोज पे ही बात कर लें, ये नहीं कर सकते। हमें मेडिसिन की क्वालिटीज पे एश्योरेंस नहीं होती, हमें उनके ऑब्स्टेकल्स हटाने पे एश्योरेंस नहीं होती। तो इसीलिए बहुत सारे ऐसे केसेस है जहाँ आपको क्योर जनरली नहीं मिल पाती है। तो इसको अपना फेलियर मत समझो, इसको समझो कि हम अपने प्रिंसिपल्स में से कहीं ना कहीं कुछ हमारे साथ गड़बड़ हो रही है। तो ये मेरी तरफ से एफर्ट्स 3 था। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो हमारे केसेस हैं, मतलब जो भी हमारे केसेस हैं, उसमें से मैं आपको सिर्फ एक केस दिखाता हूँ। जो हमने सेवाइना का जिक्र किया था वो सर ने एक बार जिक्र कर दिया। तो ये जो जेराइटल वार्ड्स हैं जो आपको दिख रहे हैं,
इसकी सिंगल मेडिसिन हम वार्ड्स में रिपर्टरी में है, जो सेवाइना है। मैंने 3 या 4 केसेस पे ट्राई करी है और अभी तक मुझे किसी और मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं पड़ी। ये जो केसेस हैं जनरली, इस केस का जब हमने फाइनल रिव्यू देखा तो पेशेंट जो है वो भी बिल्कुल ठीक है। और ये आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे से वार्ड बचे हैं। बाकी ऑलमोस्ट सारे जो वार्ड्स हैं वो सब क्लियर हो गए हैं, और पेशेंट जो है वो बहुत ही खुश है। और मतलब उसको पता लगा कि होम्योपैथी की कुछ सिंगल डोजेज में कितना कमाल हो सकता है। जब मेरे पास आया था तो बहुत ज्यादा डराया हुआ था डॉक्टर्स में कि आपको कोई ऐसी इन्फेक्शन हो गई है जो बहुत खतरनाक है। लेकिन सबाइना 200 की एक ही डोज ने काफी हद तक उसको बिल्कुल रिलीफ कर दिया। मतलब पेशेंट बहुत हैप्पी है। सो थैंक यू सो मच। आज का बस एक लास्ट और वो रह गया डॉक्टर शिल्पी। अभी जो मुझसे जो ग्रुप में एक डिजीज पूछी गई है, जिसमें उन्होंने एक फोटो भेजा है डॉक्टर अमोल ने शायद, और वो डिजीज जानना चाहते हैं, यस तो सर। इस डिजीज का नाम है सिरिंजोमा। ये जेनेटिकल डिजीज है। ये रिप्रेजेंट करती है जस्ट एक्ने को। मतलब जैसे एक्ने होते हैं, एक्ने की दूसरा कन्वर्जन है, लेकिन इसकी खास बात है ये जेनेटिक होगी। और इसमें ना कभी पेन यस होगा, सर। ना इसमें कोई इचिंग होगी, ना इसमें कभी कभी कोई बहुत ज्यादा सिम्टम नहीं आएगा जब तक कोई पेशेंट उसको इचिंग ना कर ले। तो जब भी कभी सर ऐसे सर। पेशेंट की तरफ, हाँ, जब भी कभी ऐसे पेशेंट को आप देखेंगे तो हमेशा सर ने जैसे अभी सिखाया कि हमें एक पिक्यूलर हिस्ट्री पे जाना पड़ेगा, हमें उसके जेनेटिक पैटर्न पे जाना पड़ेगा। अगर आप इतना सब भी कुछ नहीं निकाल पाते हैं तो मेरी तरफ से सिर्फ कार्सिनोसिन एक डोज है। आप उसको जरूर देखना। अगर कार्सिनोसिन के सिम्टम मिल रहे हैं तो आप इसको जरूर प्रिस्क्राइब करो। दूसरा एक सबसे अच्छी मेडिसिन है, वो है एंटीम्क्रोड। ये भी इसमें अच्छा बहुत वर्क करती है। कोई ना कोई ग्रेव की हिस्ट्री कहीं ना कहीं पार्ट्स में जरूर मिलेगी, लेकिन मैंने कहा ना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मतलब आजकल पेशेंट इतने सीक्रेटिव हो गए हैं कि वो हर बात नहीं बताते। वो चाहते भी नहीं कि आप हम उनकी फैमिली हिस्ट्री में जाओ। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो हमसे स्पेशली बोलते हैं, तो हम उनको सिर्फ कुछ ही सिम्टम्स पे या उसके जो मियाजमेटिक बैकग्राउंड को देख करके हम उनको दवाइयाँ देते हैं। हाँ, धीरे धीरे वो कन्वर्ट हो जाते हैं और हम लोगों को सब कुछ बताते हैं। लेकिन हमें इनिशियली केस को कैसे टैकल करना है, ये डॉक्टर हैनीमैन सर ने उस सिंबल में बताया था कि हमें कोई भी एफोरिज्म को कहीं पे भी कैसे भी फिट कर लेना है। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें केस को कैसे टैकल करना है। ये एक आर्ट है, ये साइंस नहीं है कभी भी। सर जी। जेनेटिक हिस्ट्री है, मामा मामी, सॉरी, मामा हाँ। मौसी, हम्म, मदर, नानी, सब इससे इसी तरीके के इरप्शन है इसके फेस पे। जी। एक्चुअली मैंने डॉक्टर अमोद ये बताया ना कि जिसको पहली बार शुरू हुआ होगा उसकी हिस्ट्री तो आप ले नहीं पाएंगे, है ना। जी अभी तो हमारे पास पेशेंट आया है तो वो जो जेनेटिक्स जहाँ से शुरू हुई उसकी हिस्ट्री प्रॉपर जी लेनी पड़ती है। लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आपको मियाजमेटिक जी बैकग्राउंड पे चले जाना चाहिए और एक बार कार्सिनोसिन को मैच करो। मतलब उसकी देखो कि चॉकलेट्स की डिजायर कैसी है, उसका ग्रीफ कैसा है, पेशेंट में जो फैमिली हिस्ट्री है, जिन जिनको ये है जी उनके पैटर्न कैसे हैं। तो कार्सिनोसिन जी। वुड बी बेस्ट चॉइस। सर सर सर, वार्ड का जी। एक बच्चा है, वो एनएल एरिया में है, तो क्या सराय ना दे उसको? कौन सा? एनएल वार्ड, एनएल हाँ एरिया जेनेट में वार्ड है, हाँ जेनेटल वार्ड्स है ना। जेनाइटल में। हाँ बिल्कुल, देखे देखो। जी सर। बिल्कुल, ये ऐसी चीजें हैं ना जो जैसे छोटा अभी सर ने बताया कि छोटा जहाँ सा सिंगल बच्चा है, रूब्रिक्स मैं पड़े हैं। भेजूंगा कि। हाँ जी, जहाँ पे सिंगल रूब्रिक्स में सिंगल मेडिसिन जी पड़ी सर। है वहाँ पे आपको कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है। ये स्टडी तो ऑलरेडी हमारे जो जी स्टार वार्ड्स हैं वो करके चले गए। हमें तो सिर्फ इनको भी यूज कर लेंगे तो भी बहुत है। जी मैंने जी। ऐसे बहुत सारे भी मेरे पास स्टूडेंट आने लगे हैं जो फ्लैट कहते हैं वार्ड कि में सर हम। तो फ्लैट, हाँ जी। सर फ्लैट वार्ड में करता हूँ मैं, ऐसा लाभ मिलता है उससे फ्लैट वार्ड से। कौन से वार्ड में? सॉरी यार, आवाज नहीं आई। फ्लैट, फ्लैट वार्ड सर, फ्लैट, फ्लैट एफ वार्ड एल में? एट, हाँ, फ्लैट फ्लैट वार्ड वार्ड। में जनरली गलका हमारा जी बहुत अच्छी काम करती है। जी, फाटक को फॉलो करता हूँ और डलका मारा है सर उसमें। हाँ, बहुत बढ़िया। ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे हमें बहुत लॉन्ग टेस्टिंग में जाना ही नहीं है, ऑलरेडी सब कुछ तो लिखा है। ये तो स्टार बोर्ड ने पहले ही कर दिया। मेरे पास बहुत सारे जी स्टूडेंट आते हैं जो कहते हैं सर हम तो 3 घंटे की टेस्टिंग कर रहे हैं और इतना जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनको बोलता हूँ कि पहले सबसे पहले थीम को बनाओ, पेशेंट को समझो। कभी ऐसा ना हो कि पेशेंट आपको कुछ बताना ही नहीं चाह रहा और आप उसे 3 घंटे खाम खाम ही बहस कर रहे हो, या आप ऐसे सिम्टम को लेते जा रहे हो जिनका कोई यूज ही नहीं है। तो हर सिम्टम की अहमियत को समझो कि उसका यूज क्या है। ठीक है। ठीक है डॉक्टर शिल्पी। थैंक थैंक हाँ जी सर। जी। किसी और के कोई डाउट्स प्लीज भेज दीजिएगा, या तो मेल पे या अलग से आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्लास में वो सारे क्वेश्चंस हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और सभी लोग कनेक्टेड रहो, ज्यादा अच्छा है। और अच्छा लगता है कि आप सब लोग कुछ सीख रहे हैं। मैं बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि चाहे एक लेक्चर से सिर्फ एक बात ही सीखो, वो भी काफी रहेगी। तो मैं जरूरी नहीं कहता कि हर एक बात को फॉलो करो, लेकिन कोई एक बात को भी फॉलो करेंगे तो बस काफी रहेगा। हमें एक नॉलेज मिलनी चाहिए, वो वही काफी है। सो थैंक यू डॉक्टर शिल्पी। और thank- मीटिंग एंड कर दूं? हाँ जी, कर दीजिए। ओके, यस। थैंक यू एवरीवन। गुड नाइट। थैंक यू।